What is up, people? Another day, another video. So, today we're gonna talk about Abhi and Neo. I've made a video on my main channel about them before, and in that video, I think they were talking about all sorts of conspiracy theories. You can go see that video, I'll link it down below. Today, I just wanna look at their channel again and see what changes they made to their content. So if you look at their channel, you can see that most of their content revolves around what's in the news, like cricket or politics, whatever's gonna get more eyeballs. And that is something they have always done, right? I don't see any change from Abhi Neo x the old Abhi Neo, except I don't see many conspiracy theories. I will take a look at this. This seems sus. Aliens real, but other than that, I don't see many conspiracy theories. And yeah, become a sort of literal pseudoscience and conspiracy theory police of YouTube India. And yeah, I don't really see conspiracy theories. And I've gone back like 5 months, 6 months. It's all Modi, foreign minister, some political thing, some Pakistan, something. I've gone back like 6 months. I don't see anything. I think it's fair to say they've cleaned up their content, at least from what I can see. Let me know what you think. But these are two videos that I feel are still sus, and I'm gonna have to take a look at both of them. So, I'm recording this clip after watching that whole aliens video, and I can say that there are absolutely no conspiracy theories in that video whatsoever, which I'm really appreciative of. Not only that, I think the video is really well made, and I think to people who are new to these ideas, like they've covered things like the Fermi paradox, the Drake equation, the types of civilization, all these things, and to someone who's coming across all these ideas for the first time, I think they presented it really well. And I have to say that one of these videos, this thing, the one about sex education, that video was also really good. I happened to watch that on Instagram, and that's a really good video. So I'm actually starting to like the direction Abhi Neo have taken with their channel. And with that said, I must subscribe to them because I like them now. They're good. And with that said, I did happen to watch this sugar video on another channel. So that's why you don't see the red bar over here. But I think this video here, I have to watch this one, review it, take a look at what they've said, and yeah, based on that, make a judgment. But yeah, I think Abhi knew the way, the direction they've taken their content. They've taken feedback really well. They've taken their content in a really good direction. I really like that. With that said, let's watch this sugar video. ये एक सिगरेट है, अगर मैं इसे अभी लाइट करके स्मोक करने लगता हूँ तो नीयू मुझे चप्पल से मारेगी। लेकिन ये एक चॉकलेट है, अगर मैं इसे खोलकर खाने लगा तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हो सकता है कि मेरे लिए ये हार्मलेस चॉकलेट एक सिगरेट से ज्यादा एडिक्टिव हो। पूरा भारत नशेड़ी है और जिस ड्रग की हम बात कर रहे हैं वो आपके So they claim that chocolates are more addictive. किराने की दुकान में भी मिलता है। आप खुशी खुशी आपके बच्चों को वो ड्रग खुद देते हैं और आपके बच्चे भी ऑलरेडी एडिक्ट बन चुके हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट शुगर। ये व्हाइट पाउडर जो रिसर्च के हिसाब से कोकेन से भी ज्यादा। So, sugar being more addictive than cocaine, I'm not very sure about this research. They've not really shown any research paper or anything, but yeah, I'm kind of skeptical of this. See, we don't know how addictive cocaine is because I'm assuming none of you who are watching do cocaine yourself. Comparing the addictiveness of sugar to the addictiveness of something we don't know is problematic to say the least. Now, we've all grown up eating sugar. I don't think sugar has caused the same level of harm in our lives as cocaine has in literally every life that uses it. So I'm not very sure if we should compare the addictiveness of sugar with cocaine. Although that's not to say that sugar is not addictive. Yeah, I'm sure that it is addictive, but
yeah, you can see the problem in this comparison. लेकिन क्यों शुगर जैसा हार्मलेस सब्सटेंस हमारी बॉडी पर क्या असर करता है, ये फिगर आउट करने के लिए हमने एक सिंपल टेस्ट की, एक वेइंग मशीन I like their editing, what they've done with. खरीदा और आपके डेली यूज के प्रोडक्ट्स भी, और कंपेयर किया कि उनमें एग्जैक्टली कितनी शुगर है। These kinds of videos where you take a bowl and a weighing scale and you add teaspoonfuls of sugar, that's the format of a fear-mongering video. So, yeah. पर आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। और क्या हमें शुगर हमारी लाइफ से कंप्लीटली कट ऑफ कर देनी चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। So the problem with most fear-mongering videos that talk about sugar in your diet is that they conclude that sugar is bad, flat out bad. Whatever happens, if there's a lot of sugar in any food, just avoid it. Or eat it some small amount, say once a month or whatever. I think that's a very black and white approach, and I understand how some people who give that message say that with the aim that the message should be simple enough for the average layperson to understand and apply it in their lives. But the problem becomes that in their process of simplification, the message becomes too oversimplified. And in the end, lacks all nuance. It lacks nuance about what's wrong with sugar, what exactly is sugar, how does it harm the body, how does it impact your weight gain or weight loss, all these things. Now, I'm saying this as a person who has gone through that journey of losing a lot of weight. I'll post some Instagram images here. Yeah, I've actually gone through several months of working out and losing weight and eating properly. And I know this is anecdotal evidence, but in that period, I didn't try and avoid sugar. I ate it, but I ate it in a limited amount, not once a month as I've seen many fitness pages say, or some ridiculously small amount like that. But I've eaten it within my calorie limits. I've eaten things like mangoes, ice creams, juices, whatever. But the problem is that things like juice, things like liquid calories, drinks and stuff, they usually have a lot of calories in a small volume. So you hardly feel full, even though you've had a lot of calories. And to lose weight, I'm sure many of you who have lost weight would know, you have to make sure you eat less calories than what your body needs. That way, the body will take the remaining calories from your fat and burn that fat and you lose weight. That is the process of weight loss, very simple. The problem here is that when you drink liquids that have a lot of calories, you barely feel full, but you have exceeded your calorie amount. So just by following my calorie limited weight loss diet, I managed to stay completely within my sugar intake diet. The thing is that this is a bit too complex, but it's far more reliable, more accurate, more science-based. But replacing this whole thing with a very simplistic message of don't eat anything that has a lot of sugar is problematic, because people who follow that end up avoiding enjoyable moments in their life. Enjoy dessert once in a while. Enjoy something sugary once in a while. Your body has mechanisms like an insulin response and stuff to combat that. You can have a lot of sugar once. That's fine. Your body will handle that. Just don't make a habit out of it. And if you're staying within your calorie limits, perfectly fine. Nothing will ever happen to you. Now, this, I must put a caveat here. What I'm saying applies to the general healthy population. If you have medical conditions or dietary restrictions, whatever, you should talk to a qualified professional, talk to a dietitian, talk to your doctor, whoever. But the general healthy population, apply this in your lives and you'll be fine. Now, about how to actually design your diet in a way that you eat the required amount of calories, you're getting enough protein, that is something these pages don't cover, and something I feel I should cover, but I want to do it in a separate video. But if you're really interested, there are tons of resources out there. Just search how to calorie count or something on YouTube, and I'm sure you'll find a lot of videos, lots of guides on how to do it. That's how I did it, and I was really successful at it. But let's go back to the video and see what they say. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको इस वीडियो से It's not an अभी new video until they say इस वीडियो को end तक देखिए. वैल्यू मिलती है तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करना ना भूलिए. ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है. चैप्टर 1,
शुगर से क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर निकोल अवीना प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। उन्होंने रैट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें पानी के बजाय शुगर वाटर देना स्टार्ट किया और उनके ब्रेन पैटर्न को ऑब्जर्व किया। रिजल्ट्स शॉकिंग थे। उनके स्ट्रेस लेवल बढ़े। वो नॉर्मल पानी से 3 से 4 गुना ज्यादा पानी पीने लगे। बिंज ईटिंग या बिंज ड्रिंकिंग करने लगे। फिर शुगर वाटर बंद करके नॉर्मल पानी शुरू किया तो उन्होंने उस नॉर्मल पानी को छुआ भी नहीं। उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स होने लगे, क्रेविंग्स बढ़ी और साथ ही साथ एंजाइटी और स्ट्रेस भी। और कुछ ब्रेक के बाद Now, the problem with this kind of a study is it seems to have been done on a very few, maybe even just 1 or 2 rats or couple of rats or whatever. I want to see how accepted this is, how reliable this is, how replicable this is, and what's the sample size, all these things. I would appreciate if they provide the actual study in the description, but they haven't done that. See, that's a problem for someone like me who wants to actually see the actual research. Yeah, I really wish they'd done that, but okay. फिर से शुगर वाटर स्टार्ट करने पर वो पहले से ज्यादा शुगर वाटर कंज्यूम करने लगे। यही सेम बिहेवियर ड्रग्स कंज्यूम करने पर हमारे ब्रेन में होता है। जब भी हम कोई हाई शुगर आइटम खाते हैं जैसे कि ये चॉकलेट्स, तो हमारी टंग में स्वीट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर सिग्नल सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमारे दिमाग में दिवाली होती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मीठा खाने पर वो सेम एरिया एक्टिवेट होता है जो ड्रग्स करने पर एक्टिवेट होता है। हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसे हम कहते हैं डोपामिन, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेस हार्मोन भी रिलीज होता है, ऑल्सो नोन एज कॉर्टिसोल। ये एक अजीब कॉम्बो है, ड्रग्स और So they're talking about this whole reward mechanism, this dopamine mechanism. That is common knowledge. I think they're bringing it to their audience, and I'm assuming their audience, many of them are unaware of this as of yet. That's a good thing. That's a really good thing that Abhi and you are doing this. However, I think sugar is much more complex than just this, just a reward system and whatever. I don't know if they've covered all that nuance, but yeah, that's a problem. If your sugar is ultimately just a carb. So if you're staying within your carb limit, if you're staying within your calorie limit for a healthy individual, it should be fine. I'm not sure if they say that in the video. और शुगर में सिमिलैरिटी यही है कि दोनों कंज्यूम करने से हमारा ब्रेन कहता है रैशनैलिटी गई तेल लेने, कहाँ रुकना है, कब बस करना है, हमारे ब्रेन को पता ही नहीं चलता। चैप्टर 2 द एक्सपेरिमेंट। टाइम फॉर द एक्सपेरिमेंट। सुपरमार्केट में हर प्रोडक्ट के पीछे ऐसे लेबल्स होते हैं। शायद आप में से कुछ लोग लेबल्स पढ़ते भी होंगे, लेकिन विजुअलाइज करना। This video completely reminds me of Instagram fear-mongering videos where they take products. This is Food Farmer's MO. There's a page on Instagram, if you're not aware, it's called the Food Farmer, and this is his MO where he takes multiple packaged food items and just scares his audience by showing how much sugar is in them. But okay. इतनी शुगर होती है। इस एक चम्मच में 8 ग्राम शुगर आती है। शुरुआत करते हैं उन चीजों से जो हम खुशी खुशी अपने बच्चों को देते हैं, बिस्किट और चॉकलेट। इस बिस्किट के पैक में एक पूरा कप शुगर है, अराउंड 43 ग्राम्स, जो खाने पर पूरा दिन का शुगर का कोटा भर जाता है। चॉकलेट के एक पैक में 1.5 कप, सीरियल के एक बड़े पैक में इतनी शुगर, और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में 80 ग्राम्स यानी कुछ इतनी शुगर है। अगर आप घर में सिरप्स रखते हैं जो दूध में मिलाकर पिए जाते हैं तो उनमें इतनी ज्यादा शुगर होती है। केचप तो मीठा नहीं होता, लेकिन इस छोटी केचप की बोतल में 52 ग्राम शुगर है। ये प्रोटीन बार हेल्दी होने के बावजूद इसमें इतनी शुगर होती है। Which protein bar is this? Guys, I'm sure if you look at the amounts in the ingredient list, the tables, and calculate how many grams of each thing, how many calories you're taking in, you never have problems like this. होती है। और ये सैलेड ड्रेसिंग जिसे हम सैलेड के साथ हेल्दी रहने के लिए खाते हैं, उसमें भी इतनी सारी शुगर होती है। यू सी, ये पूरा एक्सपेरिमेंट 2 प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है। एक, आपको विजुअलाइज करने में हेल्प होती है कि जिन प्रोडक्ट्स में आप शुगर एक्सपेक्ट करते हैं उनमें एग्जैक्टली कितनी शुगर होती है, और 2, आपको ये रियलाइज होता है कि जिन प्रोडक्ट्स में आप शुगर एक्सपेक्ट नहीं करते उनमें भी शुगर होती है। यानी इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से इजीली आप हर दिन WHO रिकमेंडेड लिमिट को क्रॉस। The only message that I'm taking away from this video so far is that sugar is bad. But that's just fear-mongering. Tell them about why sugar is bad, how much sugar is bad. Is sugar actually bad if you eat it, if you understand all these nuances and eat in the right amounts? Don't see that. कर सकते हैं। चैप्टर 3, कितनी शुगर खाना ओके है? अक्सर हम सोचते हैं शुगर इज इक्वल टू दिस, ये व्हाइट चीनी जो हम चाय में मिलाते हैं, लेकिन शुगर अलग अलग फॉर्म में आती है। ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, स्टार्च,
कॉर्न सिरप, ये शुगर के ही सारे अवतार हैं। WHO कहता है कि आपको 50 ग्राम्स यानी 10 छोटे चम्मच शुगर से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जो कुछ इतना है। द प्रॉब्लम इज नॉट विजिबल शुगर, द प्रॉब्लम इज इनविजिबल शुगर, क्योंकि कोई भी इंसान चाहे कितना भी अनहेल्दी हो, एक बार एक समय में 9 चम्मच शक्कर नहीं खा पाएगा, लेकिन एक बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक पीने से फटाक से 79 ग्राम शुगर कंज्यूम कर लेगा। कोका कोला के सीईओ का एक इंटरव्यू फेमस है, जहां वो कहते हैं कि अगर आपको फिट रहना है तो आप शुगर फ्री कोक पी सकते हैं, जिसका टैगलाइन है सेम ग्रेट टेस्ट विद जीरो शुगर, जिसमें सब जीरो है, कैलोरी जीरो, फैट जीरो, प्रोटीन जीरो, शुगर जीरो। भाई हो क्या रहा है? हाउ इज दैट पॉसिबल? द आंसर इज केमिकल्स। एक 8 साल का ऑब्जर्वेशन Chemophobia. Don't just say chemicals. This just reinforces chemophobia. What chemicals? Are all chemicals bad? Everything is chemical. Your body is made of chemicals. Everything that you see, this mic, these are all chemicals. Water is a chemical. H2O is a chemical. But if you just say chemicals vaguely, that's promoting chemophobia. स्टडी कहता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से ओबेसिटी और फैट गेन के चांसेस बढ़े। फॉस्फोरिक एसिड की वजह से दांतों का एनामल डिस्ट्रॉय हुआ और दांतों के इरोजन जैसे प्रॉब्लम सामने आए, और डायबिटीज पर इसका See, you only mentioned a couple of chemicals, a few chemicals that may be harmful. But what about all the others that are called chemicals? Water is a chemical. Is that harmful? कोई असर नहीं दिखा। अक्सर बेवरेज कंपनीज शुगर को रिप्लेस करने के लिए अस्पार्टम यूज करते हैं, जो शुगर से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसका कैंसर से भी कोरिलेशन हो। See, aspartame linked to cancer. We remember that misinformation video, right? Biggest news in health today. Aspartame, the sweetener used in Diet Coke, is going to be listed as a possible carcinogen. This is why presenting half-baked knowledge completely out of context to create fear in the public is a terrible idea. As to that can of Diet Coke that he's holding in his hand, do you drink 12 to 36 cans of it in a day? No? Good, because that is the quantity of aspartame involved in even posing as a risk, and that too a possible carcinogen risk. एक सिंपल सी टेक्निक है जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। लेबल्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते समय उसके पीछे देखिए। Reading labels won't do a thing unless you're actually using it to calculate how many calories you're taking in, how many grams of carbs, proteins, fats you're taking in with each food. And this can be done with any packed food. Now, if you're eating things like rice or mangoes or fruits or whatever, you can always Google how many calories per gram are there, and then you can calculate how many grams of it you're eating by using a kitchen weighing scale. This is something I would appreciate, but again, in the process of simplification, they've oversimplified and removed all nuance. लेबल्स पर लिखा होगा कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये भी लिखा होगा कि सर्विंग साइज क्या होनी चाहिए। मार्केटिंग वाले लोग स्मार्ट होते हैं। 500 ml की कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर 100 ml में कितनी शुगर है, बस इतना ही लिखता है। तो Yeah, man, you're making it easier for people to not actually do the calculation themselves. आपको मेंटली उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। Why mentally? You can use paper and pen and convert. और ग्राम्स को विजुअलाइज करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और ग्राम्स को टीस्पून्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि आप Or if you have a weighing scale like this, you can actually see the actual grams. It's right there on screen. विजुअलाइज कर पाए कि आप कितनी शुगर खा रहे हैं। याद रखिए कि शुगर की मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। पिछले 200 सालों से मार्केटिंग कंपनीज ने आपको उल्लू बनाना सीखा है, तो वो जीरो एडेड शुगर के नाम पर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। हाई फ्रुक्टोज। See, the problem is, I think there's a lot of fear mongering on this topic, how MNCs, how large companies, food companies are fooling its customers by all these marketing tactics, by putting convoluted information in their product, ingredient list and calorie information. While I agree there may be some companies that do that, for the vast majority of food items, for packed food items, if you actually have that information and if you actually calculate using that and apply it in your life, in your food habits, you will actually lose weight or gain weight or whatever your weight goals are. You will actually do it. I am an example for exactly this. I've applied this in my life and done this. And on Instagram, if you go to my page @scienceofjob_, you will find a lot of good pages, examples of good diet, science-based diet information pages that I've talked about, that actually talk about good diet tips, not plain fear-mongering. कॉर्न सिरप, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, ब्राउन राइस सिरप, अगावे नेक्टर, ये सारे मार्केटिंग टर्म्स है, लेकिन आपकी बॉडी को शुगर में और इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता। ऐसे टर्म्स की पूरी लिस्ट आपको हमारे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। And that is this link over here. But I'm not really interested in that. I would much rather they had listed the studies they used
as reference. सो द फर्स्ट सोल्यूशन इज इनविजिबल शुगर को एलिमिनेट करो. अंडरस्टैंड दिस कि हमें लाइफ से डेजर्ट्स को एलिमिनेट नहीं करना है, लेकिन ये You're eliminating deserts by eliminating invisible sugar, bro. There's no other way. समझना है कि लाइफ के कुछ मील्स डेजर्ट्स के बिना भी कंप्लीट हो सकता है. सोल्यूशन नंबर 2 इज मेक योर ओन डेजर्ट्स. होटल में टेस्ट को प्रेफरेंस देते हैं. खाना ज्यादा टाइम के लिए फ्रेश रहना चाहिए तो प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं. पैकेज डेजर्ट्स कब बनते हैं, कितने समय के लिए फ्रिज में रहते हैं, ये फिगर आउट करना इम्पॉसिबल है. लेकिन अगर आप घर पर डेजर्ट्स बनाते हैं तो आप खुद आपके हाथों से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं. आप कौन See, this is also something I hear in fear-mongering pages, even on Instagram. Make your own stuff. Buy only organic stuff. Buy these high, expensive, curated nutrition stuff. You know what's the reason these things are available in such a large scale? It's because they're made more affordable. If everyone were to make desserts at home, or buy expensive, highly curated items, it wouldn't be feasible. It wouldn't be affordable to a lot of people. You're not thinking about that. इसलिए उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं. लाइफ में से टेस्ट को एलिमिनेट मत कीजिए. टेस्ट के लिए शुगर होनी चाहिए, इस कंपल्शन को एलिमिनेट कीजिए. सोल्यूशन नंबर You know, taste actually requires some form of carb. I mean, some form of sugar like that. Or you'll have to depend on artificial sweeteners if you want to eat sweet things. That is. So, yeah, you have to pick your choice, and that's the way our bodies evolved. We've evolved to sense or taste carbs as sweet. There's nothing you can do about that. 3 इज मेडिसिन. मैं कोई दवाई रेकमेंड नहीं कर सकता, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, ना कि एक डॉक्टर हूँ. बट अंडरस्टैंड दिस कि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है. इंटरनेट पर स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ढूंढना बंद कीजिए. अ प्रॉपर वे टू अप्रोच दिस इज आपकी ब्लड टेस्ट करवाइए, शुगर लेवल्स चेक कीजिए और अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लीजिए. हमारी आदत ये होती है कि हम एक डॉक्टर को एक मैकेनिक के जैसे देखते हैं. अगर गाड़ी में प्रॉब्लम है तो ही डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं तो सालों साल टेस्ट ही नहीं करवाते. इसलिए बाहर से हेल्दी दिखने वाली बॉडी अंदर से कैसी है हम पता नहीं कर पाते. ग्लूकोज गॉडेस एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जो आपकी बॉडी में स्पेसिफिक खाना खाने के बाद होने वाले ग्लूकोज स्पाइक्स आपको दिखाती है और ग्लूकोज लेवल्स मेंटेन करने के लिए क्या किया जा सकता है इस पर सॉल्यूशंस भी देती है. हो सकता है कि आपका ब्रेन ऑलरेडी शुगर एडिक्ट हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आप कॉन्शियसली बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं खुद पर. I've seen like 80-85% of the video, and I don't see the nuance being addressed. Of course, they've not made it completely black and white. They've said, okay, don't eliminate sugar completely. You can have a bit of it, but only on special occasions. But avoid taking it in shops. Make desserts at home. And I've told you what the problem is with that kind of messaging. Still, the nuance is completely unaddressed. And I don't think they're going to address it in the remaining 15% of the video. पर और खुद के फ्यूचर पर कंट्रोल पा सकते हैं. चैप्टर 5 कंक्लूजन. इस वीडियो की शुरुआत में मैंने शुगर को ड्रग्स से कंपेयर किया, लेकिन क्या एक चॉकलेट बार एक्चुअली एक सिगरेट जितना बुरा है? द आंसर इज नो, क्योंकि एक सिगरेट में न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 होती है. आपकी बॉडी को कैंसर के अलावा कुछ नहीं मिलता, इसीलिए हम तंबाकू को फूड इस कैटेगरी में नहीं डालते. अगर आप एक आइलैंड पे फंसे हुए हो और आपने 2 दिन से कुछ खाना नहीं खाया और आपको ऑप्शन मिलता है एक सिगरेट या फिर एक चॉकलेट बार, तो ऑब्वियसली आपको वो चॉकलेट बार चूज करना चाहिए. दैट्स व्हाई इन माय हम्बल ओपिनियन, जहां आप लेबल्स ठीक से पढ़ सकते हो, जहां पर शुगर कितनी है ये हाइड करने की कोशिश नहीं हो रही है, और जहां आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हो कि कितना कंज्यूम करना है, वो प्रोडक्ट बेहतर, क्योंकि एटलीस्ट आपको इस बात की आइडिया है कि आप आपकी बॉडी में क्या ठूस रहे हो. सिगरेट और कैंडी, इन दोनों आइटम्स की सिमिलैरिटी सिर्फ आपकी एडिक्टिव बिहेवियर और लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी पर होने वाले बुरे असर तक लिमिटेड है. बाकी ये दोनों आइटम्स बहुत डिफरेंट है. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई सिगरेट्स पर एक स्टिग्मा अटैच्ड है, लेकिन आपको डायबिटीज देने वाली एनर्जी ड्रिंक आपको फार्मेसी में भी मिलती है. ये कोई कोइंसिडेंस नहीं. एक Again, the problem is nuance. It's available in the pharmacy because, let's say, if you're doing sports, if you're doing a lot of physical activity, it's good if you have something that has a lot of glucose, energy drinks, sports drinks. Those are good if you're doing a lot of physical activity. So, if you had nuance in this video, that would be addressed. मार्केटिंग टेक्निक है आपको कन्विंस करने के लिए कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है. अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए, क्योंकि कोई भी चीज एक लिमिट के बाद हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल बन ही जाती है. एक गाड़ी Yeah, I think that's about it. They're gonna give more analogies and reasons. Cool. So ultimately, my takeaway is that Abhi Neo have definitely changed. Their content is a lot cleaner. It's a lot less problematic. I personally subscribe to them, but they still have these black and white messaging in videos like the one I saw. And that's a problem, in my opinion. And on the flip side,
this is very beneficial for them because fear-mongering content, not just them, all pages that do fear-mongering leads to growth. So pages fear-monger, when they see the follower count rising, of course they're going to fear-monger some more. That's what these guys are doing, I feel. That's about it, I guess. I'll see you in the next one.